बात है 23 अगस्त 2023 की। इंडिया's थर्ड मिशन टू द मून चंद्रयान 3 was very close to the lunar south pole. लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। The prime motive behind its launch was to study the moon's surface, its craters and mountains to understand how these features are formed over billions of years. And we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. Finally, at 6:03 p.m. sharp, the spacecraft successfully landed on the surface of moon. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम The scientists at Indian Space Research Organization played one of the most crucial role in the victory of Chandrayaan 3. पर अगर हम अपने आसपास के सोसाइटी को सही से ऑब्जर्व करें, then we will find another set of people who are more obsessed with moon than the ISRO scientists. जो बार-बार डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं, उनके चंद्रदेव जो है वो खराब होते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी सोख लेती है। चंद्रमा लिक्विड पैसा है। हमारी हर समस्या में चंद्रमा है, हमारे हर सॉल्यूशन में चंद्रमा है। Even during the time of our country's partition, astrologers का हमारे देश में इतना heavy influence था that the Britishers got into a big trouble. Astrologers believed that 15th August 1947, which happened to be Friday, was a deeply inauspicious day. India would lie under the zodiac sign of Capricorn. Saturn highly influenced the day, complicated by the dominance of Rahu. The astrology followers heavily opposed the date of our partition to the extent that the Britishers and Indian leaders had to find a middle way. They decided that India would be granted independence during the midnight hour between August 14 and 15. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Since according to the West, the new day begins at the midnight, पर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से it begins at sunrise. पर इतने सालों के बाद आज भी हमारे कंट्री में a significant amount of people छोटे से छोटा and बड़े से बड़ा डिसीजन लेने से पहले एस्ट्रोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेते हैं। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। टॉस के समय की जो कुंडली बन रही है वह मकर लग्न की कुंडली बन रही है और लग्न में ही शनि है। आप चीनी खा के पानी पी के गर्लफ्रेंड से मिलने चाहिए, फिर उसके बाद देखिए वो आपकी सारी बात मानेंगे। अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को सही से ऑब्जर्व करें, then we will find that the increased interest in astrology or religion occurs at a time जब लोगों के लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। वो काफी टेंशन एंड एंजाइटी में रहते हैं एंड उनकी लाइफ में किसी भी चीज का कोई सेंस नहीं बन रहा होता। रिसर्च सजेस्ट दैट ड्यूरिंग सच अनसर्टेन टाइम्स इट्स ह्यूमन नेचर टू टर्न टू ए हायर पावर फॉर हेल्प, जिससे कि उनको एक सेंस ऑफ कंफर्ट एंड रिलीफ मिलता है। मल्टीपल स्टडीज हैव शोन दैट वी फाइंड नॉट नोइंग व्हाट कुड हैपन इवन मोर स्ट्रेसफुल देन नोइंग दैट समथिंग बैड इज डेफिनेटली गोना हैपन। अपने प्रेडिक्शंस से एस्ट्रोलॉजी हेल्प ह्यूमन बीइंग्स अचीव द अनसर्टेनिटीज दैट दे क्रेव फॉर। इस चीज का एक बहुत ही सही एग्जांपल है न्यूज़पेपर में एस्ट्रोलॉजी कॉलम्स। ड्यूरिंग August 1930, the world was going through a great economic depression. This was a period of several worldwide economic downturn which resulted in extreme unemployment, poverty and a significant decline in industrial production. During that time, society में लोग collectively काफी stressed and डरे हुए थे as the traditional institutions like the government, corporates and the leaders fell apart. This was the time period when people tilted towards astrology for guidance. The demand for astrology services rose in the market and first ever astrology column was commissioned for a newspaper. Again, the same kind of demand was noticed during the 2008 financial crisis and 2020 COVID pandemic. और अब सावधान कोरोना, समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। ग्राहम टाइसन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ विंटसवाटरस्ट्रैंड में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, says that under conditions of high stress, the individual is prepared to use astrology as a coping device, even though under low stress conditions he does not believe in it. It's because during the periods of intense social instability, people seek information to make sense of these events, and often they find comfort in big and abstract ideas like faith, love, and hope for the future. भले ही ये सारे ideas are very hard to measure or prove, but generally people are very intolerant to doubtful. They have a profound desire to understand the world and constantly seek narratives to connect their past, present and future, जिससे कि they can make better decisions for themselves and their families. And that's where astrology comes in. It's an oldest system which gives people a very clear frame for explanation and help them feel more in control of complex situations. भले ही वो sense of control एक illusion ही क्यों ना हो, astrology validates people with how they think about themselves and help them to deal with their day-to-day anxieties with its meaningful interpretations. और लाइफ में
कई बार हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं जहाँ पे काफी पैसा, इमोशन एंड रेपुटेशन स्टेक पे होता है। लाइक एक अनमैरिड इंसान के लिए अपना आइडियल पार्टनर फिक्स करना हो, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपना ड्रीम हाउस खरीदना हो, एक फिल्म मेकर के लिए अपनी फिल्म रिलीज करनी हो, या एक पॉलिटिशियन के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना हो। इन सारे केसेस में इट्स वेरी ऑब्वियस दैट बिफोर टेकिंग सच ए ह्यूज स्टेप, अ नॉर्मल इंडिविजुअल वुड लाइक टू चेक इट ट्वाइस एंड कंफर्म हिज डिसीजन। संजय लीला बंसाली साहब एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, 6 नंबर के गवर्नर, जिनको हम लोगों ने सजेशन दी थी ऑन पद्मावती। पद्मावती वाज इनटू लॉट ऑफ ट्रबल एज वी ऑल नो, और पद्मावत किया सेंसर बोर्ड ने, एंड स्टिल ही वाज हैविंग प्रॉब्लम्स। वी एडेड एन एक्स्ट्रा ए इन पद्मावत एंड आस्क्ड हिम टू रिलीज इट ऑन हिज लकी डेट 24th। ही इज बोर्न ऑन 24th। 26 तारीख 8 नंबर के डेट पे फ्राइडे को रिलीज करने जा रहे थे। संजय लीला बंसाली जी's faith in the science proved that the movie touched 500 crores and we had predicted a huge blockbuster. और हमारे देश में तो पॉलिटिक्स और एस्ट्रोलॉजी की काफी पुरानी हिस्ट्री है। ड्यूरिंग द ईयर 2001, केरला बेस्ड एस्ट्रोलॉजर उनी कृष्णा पानिकर advised Miss Jairam Lalita to add an extra A in her name to optimize her fortune in politics. He predicted that after changing her name, Jai Lalita would become the Chief Minister of Tamil Nadu, जिसका कि काफी लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, as it was very hard to believe. But surprisingly, in the same year, although Jai Lalita couldn't contest in elections, a party, the AIADMK, won the assembly election and she was made the chief minister as non-elected member. Do swear in the name of God. This prediction gave Mr. Panikar a lot of fame, credibility and a reward of 10 lakh rupees. पर ऐसा भी नहीं है कि इन astrologers के सारे predictions सही साबित हुए हैं. During the year 1971, the Astrological magazine, which was one of the world's longest running English astrological monthly publication, was filled with forecasts of Indira Gandhi's defeat in the election, but she won with a thumping majority. Even हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स फेडरेशन ने तो 1982 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर और 1982 से 84 तक वर्ल्ड वॉर 3 भी प्रेडिक्ट कर दिया था, बट बोथ ऑफ देयर प्रेडिक्शंस वर प्रूव्ड रॉन्ग वेरी बैडली. इन सारी चीजों के बावजूद द फेथ इन एस्ट्रोलॉजी हैज रिमेन्ड अनशेकन अमंग इंडियंस फॉर जनरेशंस, एज द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ द फ्यूचर मेक्स पीपल मोर क्यूरियस एंड एक्साइटिंग टू नो मोर अबाउट इट. और सिंस इट्स बेस्ड ऑन सच हाइपर इंडिविजुअलाइज्ड इनसाइट्स इनटू अ पर्सन's life, such as their birth date, time and place, astrology is often seen as having another degree of credibility in the eyes of some people. Astrology often connects itself to relatable themes such as dating, work-life balance and mood swings, which makes people feel that it's a story about themselves and their life. अगर आपका जन्म किसी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ, तो इन बातों का क्या मतलब? ये जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है, सबसे लंबी लाइन होती है, ये आपकी मैरिज लाइन होती है कि पहली संतान एक लड़की होगी या फिर लड़का। ज्योतिष में इसको बताने के 14 तरीके होते हैं, जिसमें से एक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. For some people, it imparts a sense of belongingness and allows them to see themselves as part of the world. Psychologists have often noticed that most astrologically inclined people tend to have an external locus of control in life. मतलब वो लोग ये believe करते हैं कि their success or failure is the result of external factors or forces which are beyond their influence. अगर इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, then rather taking its control, they generally tend to blame the external circumstances for it. आज के टाइम पे जहाँ हमारी सोसाइटी में सेल्फ केयर, सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ अवेयरनेस को काफी प्रमोट किया जा रहा है, एस्ट्रोलॉजी हैव इमर्ज्ड एज एन एंटीडोट टू एंजाइटी. टुडे मिलेनियल्स एंड जेन ज़ीज आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन अलोन थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में एस्ट्रोलॉजी को एज ए टूल इंक्लूड कर दिया है व्हिच इंप्रूव देयर सैनिटी एंड मेंटल वेलबीइंग. और हमें एक बात ध्यान देनी है दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन हाउ इंडियंस व्यू एस्ट्रोलॉजर्स वर्सेस हाउ वेस्टर्नर्स व्यू देम. इंडिया में एक एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपका फ्यूचर ही प्रेडिक्ट नहीं करता, he also acts as a relationship counselor, career guide and mental therapist. निधि चुग, जो कि एक पुणे बेस्ड टेरो कार्ड रीडर है, says that dating and marriage is the first thing clients ask me questions about. Then comes career, followed by health predictions. A big chunk of millennial population seeks the astrology consultation just to know how can things get better and long lasting in their relationship. Even शादियों के टाइम पे तो 95% of people will match their kundlis to one another before they move forward with even meeting one another. और जब से हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एस्ट्रोलॉजी के हायर स्टडीज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए फंड एलोकेट करना स्टार्ट कर दिया है, तब से लोगों का बिलीफ इस पे और स्ट्रॉन्ग हो गया है. टुडे अ डजन ऑफ यूनिवर्सिटीज आर ऑफरिंग डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट डिग्रीज इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी. दिस सेलिब्रिटीज आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बिहाइंड इंडियाज ऑब्सेशन विद एस्ट्रोलॉजी. एज जब लोग अपने फेवरेट एक्टर्स को एस्ट्रोलॉजी के बारे में ओपनली एक्सप्रेस करते हुए देखते हैं, देयर क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट इंक्रीजेस इन दिस फील्ड. I believe in hard work and of course I believe in astrology. Planets are in our life for a purpose. Yeah man, it's all hard work and luck. With the rise of smartphone accessibility and cheap data packs, social media made astrology accessible to a huge untapped audience. Today, there are
a bunch of astrology social media influencers who have transformed highly technical astrology knowledge into bite-sized digestible content pieces. आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के स्टार्टिंग से यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें निकलकर ऊपर की तरफ आए. This modification of astrology have resonated with the young audience and their identity. By observing such growth in this field today, many new age entrepreneurs and venture capitalists are investing millions of dollars in the industry. As per media reports, the Indian religious and spiritual market is estimated to be more than $40 billion, and out of this, $10 billion is for the horoscopes alone. Astro Talk, Astro Sage Kundli, and Astro Yogi are few of the new age astrology apps which have received millions of downloads and witnessed consistent month-on-month growth since their launch. इन modern apps की help से users को भी पहले के comparison में astrology services avail करने में काफी आसानी होती है. Online astrology saves a lot of their time as they don't have to personally visit the astrologer or take a prior appointment for a consultation. The cost of online consultation can be anywhere between 12 rupees to 400 rupees per minute, which most of the Indians are willing to spend. Today, people trust these new age apps more than the traditional horoscope columns in newspapers because they provide tailored information to each individual user on the basis of their star sign, birth date, time and place. In fact, many astrologers claim that they have been working overtime and are making a ton of money since the arrival of these apps. चलता हूँ. राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय.